हाय गाइस, ये है माई 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकइन्फो। मैं हूं रौनक कपूर और मैं आपको देने वाला हूं हमारे खास इनसाइट्स, स्टैट्स फॉर द बिग बैश लीग मैच बिटवीन ब्रिस्बेन हीट एंड पर्थ स्कॉचर्स। और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट ब्रैड हॉज। So let's get Brad Hodges' thoughts. Hodgie, what do we expect from the Carrara Oval as a venue looking at these teams? Well, traditionally it's a football field and they play AFL games mostly, not even cricket. So only for the Big Bash do we have cricket. Last year they played a few games there and it was more the surface. The wicket itself was on the slow side, not great for scoring. But this year we've certainly seen the wicket quicken up and we've seen some big sixes hit and it looks like a really good batting surface. So I think you'll find that the likes of Chris Lynn, who like to hit some big sixes, might flourish on this ground. चलिए, that's a big tip from Brad Hodge. It's getting better and better to bat the Carrara Oval. तो इसी के साथ let's get into our top picks. इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि My 11 Circle ऐप पे you have 100 credits, जिसमें बीच में you have to pick your team and there are 4 categories that you have to pick your players from. वो 4 categories है batsmen, all-rounders, wicket keepers and bowlers. ये भी याद रखिए, you can only pick a maximum of 7 players from one side for any particular game. So within those 100 credits, let's help you make your team along with Brad Hodges' expert analysis. Let's start with the captaincy pick. और हमारे टॉप पिक्स में हमारे कैप्टन होंगे क्रिस लिन. हॉजीज ऑलरेडी मेंशन क्रिस लिन, जो आपको 9.5 क्रेडिट्स के लिए मिलेंगे. ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं इन द बिग बैश लीग एंड ही इज इन ब्लिस्टरिंग फॉर्म. वी सॉ दैट knock against the Sydney Sixers and it looks like Chris Lynn's getting into his best shape. Our vice captain pick is Matthew Renshaw, also Brisbane Heat की तरफ से खेलते हैं. ये भी आपको 9 क्रेडिट्स में मिलेंगे on the My 11 Circle ऐप. और मिडिल ऑर्डर में काफ़ी एक अहम भूमिका निभाई है ब्रिस्बेन हीट के लिए मैट रेनशॉ ने. और T20s में एक पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन भी आपको देते हैं मैट रेनशॉ, so he can get you some extra points there. So Chris Lynn as captain and Matt Renshaw as vice captain. और मैं आपको ये भी याद दिला दूँ, बहुत सोच समझ के अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को पिक कीजिए. द कैप्टन गिव्स यू twice the points, 2x the points and the vice captain gives you 1.5 times the points. थोड़े और हमारे टॉप पिक्स पे अगर हम गौर डालें तो क्रिस जॉर्डन, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे हैं एक मैच छोड़ के, when he was expensive, जो होता है T20 क्रिकेट में, पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से है और डेथ में काफ़ी बॉलिंग करते हैं, तो ऑलवेज अ चांस दैट ही विल गेट मोर विकेट्स. 9 क्रेडिट्स में आपको मिलेंगे क्रिस जॉर्डन. साथ ही मिचेल मार्श, जो बल्ले के साथ बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से, ऑलराउंडर ऑप्शन मिलेंगे आपको. एंड again you can get him for 9 credits on the My 11 Circle app. And our next top pick is Mitchell Swepson. ये of course लेग स्पिनर है और ब्रिस्बेन हीट की तरफ से डालते हैं. 8.5 क्रेडिट्स में आपको मिचेल स्वेप्सन मिलेंगे. और साथ ही मैं ये भी आपको दिला दूं कि बहुत हाईली रेटेड लेग स्पिनर है. There's talk of him being featured in the Sydney Test as well for Australia, तो ये भी होगा उन पे कि और भी एक इंप्रेशन अपना बना दे. हमारे टॉप पिक्स एक बार फिर देखें. क्रिस लिन एज कैप्टन, मैट रेनशॉ वाइस कैप्टन, क्रिस जॉर्डन, मिचेल मार्श एंड मिचेल स्वेप्सन. ब्रैड हॉज, थॉट्स ऑन दोस टॉप पिक्स? Pretty good players, actually. Yeah, I quite like those picks. Definitely think that Chris Lynn as captain's a good one. Matt Renshaw, I was surprised you put him as vice captain, but I like your analogy there. I picked up on your Hindi and realised that he can bowl a few part-time overs and get a few cheeky wickets to up the price. So, yeah, I like those ones there. The other one that I may consider ahead of Mitchell Swepson, unless he gets drafted out of that game and into the test matches, maybe replace him with Fawad Ahmed. Right, almost like Brad Hodge when he used to play 2020 cricket, right? A little part-time spin and a few cheap wickets here and there. But let's move on to some value picks. Brad Hodge would be a value pick अगर वो अब भी खेल रहे होते, लेकिन let's go to the value picks that we've picked out for you. Liam Livingstone, Perth Scorchers की तरफ से, is a batsman, 9.5 credits. थोड़ा सा एक हॉट एंड कोल्ड इज ब्लोन दिस सीजन. कभी फॉर्म में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो एक तरह के इट्स अ गैम्बल फॉर लियम लिविंगस्टन. लेकिन अनुभवी खिलाड़ी है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज अ T20 प्लेयर एंड इफ ही गेट्स गोइंग he'd be a very handy player to get. Other than that, you have Ben Cutting that we picked as the Brisbane Heat all-rounder, 9 credits, more for his batting these days. Again, he's not quite fired, इतना ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाया है बेन कटिंग, लेकिन काबिलियत काफ़ी है उनमें. And again, a good fielder, so he can get you plenty when the game gets tight. He's got experience as well, Ben Cutting. तो ये दो हमारे वैल्यू पिक्स है, लियम लिविंगस्टन एंड बेन कटिंग, जो आपको 9.5 and 9 credits respectively के लिए मिलेंगे on the My 11 Circle app. Let's have a look at our full team now, category wise, जो हमको recommend करेंगे. Josh Inglis, who's been in decent form, 9 credits में आपको मिलेंगे as the wicket keeper. He's from Perth Scorchers. Batsman recommendations are Matt Renshaw, जो आपको vice captain भी आप pick कर सकते हैं. Chris Lynn as captain
Ashton Turner, who's also a handy player to have. 9 credits में मिलेंगे. Liam Livingston, जिसकी बात मैंने की. And you can also go for Sam Hazlett, who can get you a pretty good value at 8.5 credits. उसके साथ साथ all-rounders में Ben Cutting और Mitchell Marsh, both for 9 credits. And bowlers में Chris Jordan, Mitchell Swepson और Jai Richardson from the Perth Scorchers can round up your team. And this team can be made with a total of 99 credits used on the My 11 Circle app. तो आपके budget में आ जाएगी ये team. And Hoji, let's have a quick comment on that team itself. Pretty decent team for you? Pretty decent team for sure. There's no doubt about that. There's some talent there, and most of those players you picked are in good form. There might be a couple of outsiders who you may look at for a cheap purchase, that being Matthew Kelly and also Max Bryant at the top of the order for Brisbane Heat. Just might be about ready to fire as well. Right, a big thank you to Brad Hodge. He's given us some more options. तो आपको हमारी फैंटेसी पिक्स के साथ साथ कुछ और भी विकल्प मिल गए फ्रॉम ब्रैड हॉज, जिसकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम सुनते ही रहेंगे. याद रखें कि टॉस के बाद प्लेइंग 11s को देख के ही अपनी फाइनल टीम तय कीजिए ऑन द माई 11 सर्कल ऐप. हम फिर हाजिर जरूर होंगे विद मोर इनसाइट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन टू हेल्प यू पिक योर फैंटेसी टीम फॉर द बिग बैश लीग. और ये था हमारा माई 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN Cricinfo.